देखिए सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज है लाइक यू आर मोस्टली वॉकिंग ऑन अ path whose locus is such that, I mean, every point on the path is going to be equidistant from a fixed point. ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दो चीजें प्रोमिनेंटली आ जाती हैं, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So if anything is moving on a path, on such a path whose every point is equidistant from a fixed common point or a fixed point, it will be, or this particle will be said to possess circular motion। ठीक है। सर्कुलर मोशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट फंडामेंटल पैरामीटर is angular displacement। angular अभी अब angular displacement क्या है? So if a particle is moving, suppose it has started its journey from this point, ये सपोज मेरा बेसलाइन, और बेसलाइन से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। This may be called as theta angle, and I have been able to travel this theta angle in time t। The angular position transverse, angular position transposed by a particle angular position transposed by a particle moving on a circular path। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इज दैट ओके?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट थिंग इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो सिस्टम्स पढ़े हैं, कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। ठीक है। तो लीनियर कुछ भी रहता है ना, तो लीनियर के लिए द दिस थिंग, Cartesian coordinate system is more appropriate and more useful for a linear motion, linear displacement. Whereas if the particle is moving along a circular path, then angular displacement, angular velocity, and angular acceleration becomes more important points to be talked about rather than their uh, linear component. जैसे अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, इसमें लीनियर मोशन का कुछ ज्यादा रोल रहता है नहीं है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी मोर अप्रोप्रिएटली और इट कैन बी इजिली डिस्क्राइब थ्रू दीज सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। ठीक है। अभी यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में हमको पता था आर थीटा होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है। ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरा अ, ये जस्ट साइड इंफॉर्मेशन है। पोलर कोऑर्डिनेट में जनरल पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर थीटा, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरी चीज हमारी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर हेलो। हाँ दीदी। एंगुलर वेलोसिटी को जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा दो टाइप के हो सकते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन angular position minus initial angular position divided by t2 minus t1 finite time difference। ठीक है।
और दूसरा ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा डेल्टा टी लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा which is also equal to d theta dt. Is that okay? अब थोड़ी सी चीज रह जाती है कि डायरेक्शन क्या होगा थीटा या ओमेगा का, ठीक है, या फॉर दैट मैटर एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो देखो अगर हम इस तरह से सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं ना, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, तो हमारे ओमेगा थीटा ओमेगा एंड जो एंगुलर एक्सेलरेशन होएगा उन सब का डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन आता रहेगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इट इज लाइक दिस, सर्कुलर मोशन है, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे कर्व करोगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, शुरू में भी बताया था वेक्टर प्रोडक्ट वगैरह के टाइम। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके अलॉन्ग अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, ये जो डायरेक्शन होगा थंब का दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ whether it is velocity, whether it is angular displacement or whether it is angular acceleration। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो द आइडिया हियर इज, अगर एक्स वाई प्लेन में हमारा मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन, द सर्कल इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। बेसिकली प्लेन ऑफ द पेपर में अगर ये सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, तो द सर्कल हैज टू लाई इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन ऑफ द पेपर इज एक्स वाई प्लेन। तो तीसरा एक्सेस बचा है क्या, जेड एक्सेस। तो मेरा थीटा एक्स वाई प्लेन में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमारा यूनिट वेक्टर किस अलोंग डायरेक्टेड रहेगा, इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग जेड कैप। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन में रहेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कैप जो रहेगा वो किस तरफ रहेगा, जेड कैप के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। इज दैट ओके? कमिंग आउट ऑफ द पेपर, मेकिंग सेंस? ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है हम लोगों को? यू नो,
angular acceleration rate of change of angular velocity alpha average is equal to omega final minus omega initial upon T2 minus T1. Adya, alpha, open the door. Hmm. Alpha instantaneous is equal to limit delta t tends to 0, delta omega by delta t that is equal to d omega dt. ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे रुक